Dear friends, we have already discussed about the structural isomerism in haloalkanes. They also exhibit optical isomerism in their molecules, and it is a space isomerism which is also called a stereoisomerism. It is also called a stereoisomerism. There are two main types of a stereoisomerism. First is called geometrical isomerism, and second is called optical isomerism. Clear? Detailed information about geometrical isomerism we have studied in class 11th in hydrocarbons chapter, and hence here today I am going to discuss optical isomerism. Before going to this topic, I would like to discuss some important terms which are frequently used in this topic. First is PPL. कॉपी में नोट कर लो आप लोग, मैं बोल रहा हूं, रीड करना होगा इसको. First term is plane polarized light. In short, you can say it PPL. Second is Nicol prism. Second is Nicol prism. Third, optically active compounds. Third is optically active compounds. Fourth, optically inactive compounds. Fourth, optically inactive compounds. Fifth, optical activity. आप लोग इसको नोट करे हो ना? हेलो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, फिफ्थ नंबर में है ऑप्टिकल एक्टिविटी. सिक्स नंबर में डेक्स्ट्रो रोटेटरी सब्सटेंस. डेक्स्ट्रो, DEXTRO, डेक्स्ट्रो रोटेटरी सब्सटेंस. डेक्स्ट्रो रोटेटरी सब्सटेंस. सेवन नंबर लेवो रोटेटरी सब्सटेंस. LAEVO, लेवो रोटेटरी सब्सटेंस. Number 8, asymmetric carbon. Number 8, asymmetric carbon. 9, chiral objects. CHIRAL, chiral objects. 10, achiral objects. 10, achiral objects. 11, enantiomers. 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 सर एक बार फिर से स्पेलिंग रिपीट कीजिएगा. ENANTIOMERS. enantiomers. 12, racemic mixture. RACEMIC. Racemic mixture. Racemic mixture. Sometimes it is also called DL mixture. A small d, a small l. Racemic mixture or DL mixture or racemic modification. तीनों एक ही नाम है. Racemic mixture is also called DL mixture or racemic modification. 13, racemization. 13, racemization. 14,
inversion, 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 and 15 retention, 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 clear? Yes, sir. हम लोग नोट कर लिए? Yes, sir. Yes, sir. ओके, वेरी गुड। नो सर अभी नहीं। अच्छा ठीक है, नोट कर लो। सर नीचे कर दीजिए सर कैमरा। ओके ओके, वेरी गुड। हाँ देखो, 14 में है इन्वर्जन, 15 में रिटेंशन, RETENTION, रिटेंशन। क्लियर? यस सर। Yes, sir. हम इसको इरेज करें। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस दिस टर्म्स वन बाय वन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। अब एक एक करके इसको एक्सप्लेन करेंगे। देखो आप लोग, कैमरा ऊपर कीजिए। ठीक है। Yes, sir. Here is the source of light. Nicol prism, PPL, plane polarized light, optically active compound. Yes, friends, listen here carefully. This is diagram. This is the source of light. Source of light. Here is the Nicol prism. The Nicol prism, which is a crystal, or you can say that which is made up of calcium carbonate, that is the mineral of calcium. It is made up of the mineral of calcium, like calcium carbonate. That is called Nicol prism. And the Nicol prism, which is placed near the source of light, that acts as polarizer. I again repeat it. The Nicol prism, which is placed near the source of light, acts as polarizer. Now, Nicol prism main acts as that a vibration of light takes place
only in one direction after passing the Nicol prism. अगर Nicol prism से लाइट पास करता है, इसका वाइब्रेशन होता है only one direction में, and that light is known as plane polarized light, PPL. The light which vibrates only in one direction, that is known as plane polarized light. देखो यहाँ लाइट का सोर्स है, नाइकोल रख दिया, नाइकोल प्रिज्म इसके वाइब्रेशन को वन डायरेक्शन में कर दिया, that is vertical. This is known as plane polarized light. After passing the light from PPL, it passes through the polarimeter tube in which a compound is placed in the form of solution, which rotates the plane of polarized light either towards the right or left. That is known as optically active compound. Yes, friends, I again repeat it. After passing the light, that is it is passed through a polarimeter tube in which a object is placed in the form of solution, which rotates the plane of polarized light either towards right or left. That is known as optically active compound. So the optic compounds are those compounds which rotates the plane of polarized light either towards right or left, known as optically active compounds. And those compounds which do not rotate the plane of polarized light either towards right or left, it is known as optically inactive compound. जो plane polarized light को rotate नहीं कर पाता है, उसे कहेंगे optically inactive compound. और जो rotate करता है उसका नाम होता है optically active compound. And this phenomenon, this property of optically active compound is known as optical activity. Clear? The property Yes, sir. of Yes, the optically active compounds by which it rotates the plane of polarized light either towards the right or left, it is called optical activity. So मैंने टर्म बताया आपको, Nicol prism, PPL, optically active compounds, optically inactive compounds, and optical activity. Clear? ऑप्टिकल एक्टिविटी को एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए. Okay, very good. सुनो, लिसन केयरफुली बता रहे हैं. सो प्लेन पोलराइज्ड लाइट्स पास करने के बाद ये लाइट आता है पोलैरिमीटर ट्यूब में. यहाँ लिख दे रहा हूं मैं, पोलैरीमीटर ट्यूब. Polarimeter tube, you can say that, a glass tube in which solution of the sample is kept or solution of the compound is kept, which rotates the plane of polarized light either towards the right or left, known as optically active compounds, and this property is called optical activity. इस प्रॉपर्टी का नाम होता है ऑप्टिकल एक्टिविटी. क्लियर? Yes, sir. ओके. देखो यहां पर आफ्टर रोटेशन है, ये आफ्टर रोटेशन. तो बताया कि ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स रोटेट्स द प्लेन ऑफ polarized light in clockwise direction, that is in right side. It is known as dextrorotatory. Dextro means you can say that right. Again repeat it. The substance or the substances which rotate the path of polarized light in clockwise direction, that is towards right, it is called dextrorotatory substances. Dextro means right होता है. Latin word dexter means right. So the substances which rotates the plane of polarized light in clockwise direction or in right hand side, it is called dextrorotatory substances, and they designated as a small d. Dextro, that is a small d, and
और बाय द पॉजिटिव साइन। इसको डेक्स्ट्रो को स्मॉल डी से और पॉजिटिव साइन से हम इसको डिनोट करते हैं। क्लियर? जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट के पाथ को राइट साइड घुमाता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कराता है, दैट इज नोन एज डेक्स्ट्रो रोटेटरी सब्सटेंसेस डिनोटेड बाय स्मॉल डी और प्लस साइन। एनी डाउट? No, sir. सर डेक्स्ट्रो किससे डिनोटेड है? A small d. Dextro is denoted by a small d or this plus sign, positive sign. ओके सर। And if the substance which rotates the path of polarized light towards anti-clock direction, anti-clockwise or left side, it is called levorotatory. L-A-E-V-O, levo rotatory substances. It is denoted by either a small L or a negative sign. कैमरा नीचे कीजिए सर। ठीक है, फिर रिपीट कर रहा हूं, लेबोरेटरी को ध्यान देना। द सब्सटेंसेज विच रोटेट द पाथ ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन और इन लेफ्ट साइड, it is called levorotatory, L-A-E-V-O, levorotatory substances, and is denoted by a small L or negative sign. ध्यान देना, डेक्स्ट्रो को स्मॉल डी और पॉजिटिव से एंड लेबोरेटरी को स्मॉल एल और नेगेटिव साइन से इंडिकेट करते हैं। दिस इज कॉल्ड लेबोरेटरी। क्लियर? यस सर। Okay, very good. Now I am going to discuss next term, that is called asymmetric carbon. Asymmetric carbon atom. इसको हम इरेज करें? यस सर। Yes, sir. Okay, देखो अब इरेज कर रहे हैं। Right. Now I am going to discuss the next term, that is called asymmetric carbon. Asymmetric carbon. The carbon atom in which all the four valencies are joined by four different groups, that is A, B, C, and D. Let a small A, B, C, D are four different groups. Then this carbon is known as asymmetric carbon. This is called asymmetric carbon. Again repeating, the carbon atom in which all the four valencies are satisfied by four different groups or atom. It is known as asymmetric carbon. नोट कर लिए? यस सर। That is known as asymmetric carbon atom. सर्टिफाइड के बाद बोल दीजिए ना सर एक बार और। नोट करो, Satisfied, sir. नोट करो, the carbon atom in which all the four valencies are satisfied by, the carbon atom in which all the four valencies are satisfied by four different groups or atoms. Four different groups or atoms. It is called asymmetric carbon. Asymmetric carbon. Now I am going to discuss chiral and achiral objects. Chiral objects. Just before going to this topic, I would like to discuss the term
सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज, तब नाम सुना है? सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज, नाम सुना है इसका? Yes, sir. क्या इसका मतलब? व्हाट इज सुपर इम्पोजेबल? Sir, when one object overlaps another. Yes, सर sir. ये when एक मतलब कायरल कंपाउंड है। जैसे ही हम लोग मिरर के आगे मतलब मिरर के आगे खड़े और हम लोग का ऑब्जेक्ट उसके सामने बन रहा है, उसके अपोजिट में ओवरलैप कर जा रहा है, मतलब कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं वो एक दूसरे को ओवरलैप कर जा रहा है, ऑब्जेक्ट ओवरलैप कर जाता है तब। सो अगर हैंड है ना, इस पर नेक्स्ट रख के कंप्लीटली कवर कर ले पूरा पूरा, दैट इज कॉल्ड सुपर इम्पोजेबल। और अपोजिट एंड हुआ दैट इज कॉल्ड नॉन सुपर इम्पोजेबल। ध्यान रखना, ये हुआ सुपर इम्पोजेबल और ये हो गया नॉन सुपर इम्पोजेबल। ये कंप्लीटली कवर नहीं कर पाता है। तो समझो कि chiral objects are those objects which are non superimposable on their mirror image। अगर मिरर इमेज को कंप्लीटली कवर नहीं करता है, that is called non superimposable। so those substances, those objects which are non superimposable on their mirror image are known as chiral objects। नोट कर लो इसको, the objects which are non superimposable on their mirror image, the objects which are non superimposable on their mirror image are known as chiral objects, and this property is known as chirality। Clear? Yes, For sir. example, human hands, a pair of hands that is considered chiral objects, they are non-superimposable or mirror image। Next, alphabet letter P, R, these all are considered chiral objects because they are non-superimposable on their mirror image। For example, देखो P ऑब्जेक्ट यहां रखा मैंने, अगर यहां रख दिया मिरर इमेज, ये दिखाई देगा हमको ऐसे। लिख रहे हो? P को देखेंगे ऐसे दिखाएगा, दैट इज ये सुपरइम्पोज नहीं किया, दैट इज नॉन सुपरइम्पोज मिरर इमेज, so it is known as chiral objects। so for example of chiral objects will be human hands, English letter P, R, etc., etc. These are the example of chiral objects। Next term is achiral objects। achiral ठीक अपोजिट इसका होगा, the objects which are superimposable on their mirror image are known as achiral objects। ACHIRAL, achiral objects। नोट करो डिफिनेशन इसका, the objects which are superimposable on their mirror image, the objects which are superimposable on their mirror image are called achiral objects। जो दूसरे को कंप्लीटली कवर कर लेता है, पूरा पूरा कवर करता है, सुपरइम्पोज करता है, दैट इज नोन एज achiral objects। नोट कर ले इसको। Yes, sir. Yes, For sir. example, what is the example of achiral objects? Alphabetical letter O, A, M, etc.
इसको इक्वल पार्ट में आप डिवाइड कर सकते हो, ऐसे देख रहे हो ना, ये क्लियर, एक दूसरे को सुपर इम्पोज कर लेगा। सो दिस लेटर्स आर द एग्जांपल ऑफ ए chiral objects which are superimposable on their mirror image. Any problem, any doubt? सर कायरल सेंटर पे यही हुआ। एक कायरल बता रहा हूं, कायरल नहीं। देखो एक टर्म जान लो, प्लेन ऑफ सिमेट्री। डू यू नो प्लेन ऑफ सिमेट्री यस सर। क्या होता है, बता सकते हो? व्हाट इज प्लेन ऑफ सिमेट्री? देखो मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनो, लिसन केयरफुली। If we observe any of our hands carefully, we find that it is not symmetric in nature. Not symmetric in nature. It means if a dotted line is drawn exactly in the center, it will not divide it into two equal and identical half. अगर बीच से लाइन खींचे तो इक्वल और आइडेंटिकल पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकता है इसको। दैट इज कॉल्ड, यू कैन से दैट these our hands are non superimposable on their mirror image of each other and they do not have a plane of symmetry. जब इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं किया इसको तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, ठीक है, इसलिए कहेंगे उसको हम लोग chiral objects। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो हो जाएगा यहाँ पर a chiral objects। So these objects as O, A, M letter that are superimposable on their mirror image, so these are a chiral objects. Clear? These are the Yes, examples of a chiral objects, right? Now I am going to discuss the next term that is called enantiomers. Enantiomers कह सकते हो आप। यस सर। enantiomers। Next term is enantiomers. What do you mean by the term enantiomers or enantiomers? जो कह लो इसको, क्या है ये? Sir, it is the compound that have the same molecular formula but optically not different. Okay, different means क्या हुआ इसका मतलब? Sir, it has only the difference in optical activity. Results are not similar. Simply कह सकते हो कि enantiomers are chiral objects। जो chiral होते हैं वह enantiomers। आप नोट पर डिफिनेशन बता रहा हूं, नोट करो। The stereoisomers, isomers which are non-superimposable on their mirror image, the stereoisomers which are non-superimposable on their mirror image are known as enantiomers. The stereoisomers which are non-superimposable on their mirror image are known as enantiomers. Just one thing you always keep in mind, that enantiomers possesses identical physical property like melting point, boiling point, solubility, refractive index, etc. But they only differ with respect to the rotation of plane polarized light. जो enantiomers होते हैं वो फिजिकल प्रॉपर्टी उनकी सिमिलर होती है, बट डिफर कहां करते हैं? ओनली इन द रोटेशन ऑफ
plane polarized light. If one of the रिपीट कर दीजिएगा ना. अच्छा नोट कर लो, बोल रहे हैं, नोट करो. Enantiomers have identical physical properties. Enantiomers have identical physical properties like melting point, boiling point, comma solubility, comma refractive index, etc. But they only differ. With respect to the rotation of, they only differ with respect to the rotation of plane polarized light. With respect to the rotation of plane polarized light. Full stop. If one of the enantiomer is dextrorotatory, the other will be levorotatory. If one of the enantiomer is dextrorotatory, then the other will be levorotatory. This is the concept of enantiomer. Clear? सर आइडेंटिकल कैसे हुआ? फिजिकली आइडेंटिकल की बात कर रहा हूं, केमिकली नहीं. ध्यान रखना, फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होगा. यहाँ डिफरेंस हुआ रोटेशन में. अगर एक डेस्ट्रो दूसरा लेव हो जाएगा, रोटेशन में अंतर आ रहा है, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी सेम रहेगा दोनों का, वो तो अंतर होगा नहीं. क्योंकि उसका मिरर इमेज बनाना है ना, वो उसका मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोज कर रहा है, सुपर इम्पोज नहीं हो रहा है, ऑब्जेक्ट तो वही रह गया. तो फिजिकल प्रॉपर्टी उनकी सिमिलर रहेगी, बट अंतर कहां होता है? रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट में. अगर enantiomers का कह सकते हो कि वन पार्ट अगर डेक्स्ट्रो है तो अंदर क्या हो जाएगा? लेवरोटेटिव. बट फिजिकली दे आर आइडेंटिकल. क्लियर? यस सर. Okay. Now I am going to discuss the next term, that is called racemic mixture or DL mixture. Sometimes it is also called racemic modification. याद रखना इस चीज को. तीन नाम इसका है. Racemic mixture, or DL, a small d and a small l, और racemic modification भी कहते हैं इसी को. तीन नाम इसका है, बारह ध्यान रखना. racemic mixture, DL mixture और racemic modification. बोले इसको, नोट कर लिए? यस सर. यस सर बोलिए. ओके, पहले समझ लो फिर नोट करना. ये मिक्सचर containing two enantiomers in equal proportions and they must have zero optical rotation, that is known as racemic mixture or DL mixture or racemic modification. Yes students, listen carefully, ध्यान रखना. DL mixture है, इसका मतलब क्या हुआ? कह सकते हो कि रोटेशन